Hi guys, welcome to my channel again. I am quite consistent now on my YouTube full blown video and I'm happy about that. But one second, let me have some water. Happy Diwali guys. Kal Diwali thi. I'm not doing fine. I have cold. I don't know, something is my nose feels so heavy. I don't know why. My eyes, nose, everything is just so heavy and watery. But anyways, I'm understanding कि मुझे किस तरीके का content बनाना है on this YouTube full blown because I want to keep it real and very candid because everywhere I'm very professional and all of that, but I'm a human. I'm sorry, my dog is just I'm a human. I go through stuff, so here I just want to share my heart out and be myself and talk things out. And today my energy is quite low. थोड़ा सा कोल्ड कॉफ हो रखा है एंड आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग सम मेकअप अगेन इंस्टा के लिए कुछ शूट करना था तो उससे रिलेटेड है. सो आई थॉट मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, पुट टुगेदर बन जाती हूँ एंड फिर वहाँ पे जाके आई शूट एंड ऑल ऑफ दैट. सो या आई एम हियर टू टॉक अबाउट सम थिंग्स जो पाइल अप थी मेरे अंदर. लाइक आई विल नॉट गो इन डिटेल्स बट स्टिल जितना मैं शेयर कर सकती हूँ आई विल बिकॉज आई एम समबडी हु जस्ट डोंट like to talk about things. Like I don't know how to deal with tough things in life. I just go quiet and deal with it internally. मैं किसी से ज़्यादा discuss भी नहीं करती कि what's troubling me because I have this weird mindset कि मुझे परेशान नहीं करना अपनी चीज़ों से किसी को. And I know that's not truth. आपको हमेशा डिस्कस करनी चाहिए अपनी बातें. इफ़ समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू, गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट. दैट्स द बिगेस्ट help that you can do for yourself. Other will do by listening you, but for you it's important that you talk it out. Okay, so I'm here to talk things out. Life been a little weird lately. Weird नहीं बोलूँगी, tough, very tough. And I don't want to cry. मैं चाहती तो मैं यहाँ आके ना seriously वो सब touch भी नहीं करती. I didn't want it to, but I don't know. The energy is quite off. I'm not myself right now. तो वो anyway थोड़ा एक fake वाला element आ जाता है and I don't want to be fake. I can't go deep because that's personal, but all I can say is just take care of yourself and people you love. Never take anybody for granted. And I'm talking about parents as well. I'm not just talking about friends and partners. वो तो बाद में आते हैं यार. Parents, just be a little aware when it comes to your parents because it's tough to talk about, but they put up a very strong facade. But I feel वो लोग भी ये लाइफ में फर्स्ट टाइम आए हैं जीने के लिए like us. It just उनकी एज और उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वी एक्सपेक्ट देम टू बी इन अ सर्टन वे. एंड इफ़ यू सी अ पेरेंट crumble down, your world crumbles down with them. Your heart breaks when you see them in pain. And I'm not talking about physical का तो all together अलग ही ball game है, but emotional pain, it's tough man. It's so tough. Earlier I was so lost in my own world, troubled with my own problems and all of that, but when real things happen ना, जब real life shits होती हैं तो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो ज़ीरो हो जाती हैं. and you feel like why we fight on very petty issues जबकि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं to pay attention to take responsibilities. and I don't know if you're understanding me even a bit, but अगर थोड़ा भी सेंस बन रहा है ना इस बात का तो बस मुझे यही बोलना है. Things are getting better. It will get better. God is there. God is always kind. He always helps. He always heals. Time heals. Family heals. You're nothing without your family, I'm telling you. If you take your family for granted now, I judge you like very hard. I don't respect people who don't respect their families, who don't take out time for their family members. I know dysfunctional family भी होती है, but dude, you can be the chain breaker. You can really go deep into the causes and fix things.
But anyways, I am not here to lecture anyone. I am so sensitive, I'm telling you. If I see somebody in pain now, I feel it in myself, and that's, I don't know, sometimes I like go super hard on myself for having this nature, but then I feel like यही nature है जिसने मुझे human बना के रखा हुआ है. It is a blessing in disguise. पता नहीं आप में किसको क्या समझ आने वाला है, because मैं कुछ भी वैसा शेयर तो करने नहीं वाली. People think I'm super like open book. ना, you know nothing about me, and I take pride on that. शुरू किया था very sad, नहीं बोलूँगी, low note. But I feel okay now. I didn't wanted to mask it. मैं चाहती तो मैं बिल्कुल भी इस टॉपिक को टच ही नहीं करती, आके अपना मेकअप करती, फन हूँ हा होता. वो मैं इंस्टा पे कर रही हूँ यार ऑलरेडी, मेरे को यहाँ पे नहीं करना है वो. एंड आई डोंट नो वाई दिस वियर्ड ग्लो. मेरा चेहरा इतना क्यूट चमक रहा है जो कि रियलिटी में हाँ ग्लो है, बट इतना नहीं है. ग्लो गॉडेस बनी हुई हूँ मैं बिल्कुल. Let me tell you what I was about to do. So I'm gonna make a transition, and I am shooting a video for Dot and Key. Can you imagine? Like sometimes जब मैं बैठती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि यार ये प्रोडक्ट्स ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इनके साथ काम करने वाली हूँ. आई यूज्ड टू जस्ट सी पीपल जिनको मैं देखती हूँ, मैं उनको देखती थी दैट वो लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत बात करते हैं डॉट एंड की के बारे में, एंड ऑल द अदर ब्रांड्स दैट आई वर्क विद. एंड नाउ दैट आई गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, आई फील सो ब्लेस्ड, एंड आई फील लाइक यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. एंड ऑनेस्टली फिर किसी चीज़ को लेके कंप्लेन करना ना is something I feel so unfair. I shouldn't be doing that, but then I go easy on myself and I feel like, okay, you're human. Materialistic things, yes, you want, you like, I will not deny that, but you're a human, you have feelings, you have emotions, you can complain, you can be grateful as well, you can make mistakes, you can learn from them, so be human, okay? जो बहुत higher level पे influencers या कोई भी होता है film star वगैरह, people are like, how can they complain about anything? How can they have a problem? They have so much money and all of that. कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ये वो. Yes, true, very well said. But emotions, यार ये मटीरियलिस्टिक, आपको लगता है जब तक आपको चीज़ें नहीं मिलती ना, आपको लगता है कि ये मिल जाएगा तो आई बी हैप्पी, वो मिल जाएगा तो आई बी हैप्पी. नो, जब तक आप अपना इंटरनल वर्क नहीं कर रहे हो ना, इवन इफ यू हैव crores and crores, you will not feel your best, I'm telling you. And lately I've been working on my internal healing, and when you go inside you understand कि कितना कुछ है यार जो मैंने फेस ही नहीं किया. I've always been escaping from myself, and when you sit down I understand it's so uncomfortable to sit down with yourself. Not when you're happy, when you're filled with pain, emotions and all of that, भागना बहुत easy होता है, किसी और चीज़ में अपना mind divert कर लेना is great, you should do that, but sometimes you should sit down with yourself and really ask yourself like how are you. वो भी बहुत ज़रूरी होता है. हम सबसे पूछ लेते हैं यार आप कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में. अपने आप से भी वो पूछना चाहिए, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. येस, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप पे ओवर पावर कर रही है, माइंड डाइवर्ट करना इज़ द वे, वैसे ही आप सेन रहोगे. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि यार कुछ भी मुझे खुशी नहीं दे रहा ना, दैट्स द टाइम यू शुड सिट डाउन एंड रियली आस्क योरसेल्फ व्हाट्स हैपनिंग. इंटरनल वर्क करते हो ना जब, आई सॉ कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको इतनी खुशी दे जाएंगी ना. इवन इफ यू आर वाटरिंग योर प्लांट यू विल बी सो हैप्पी अगर आपका इंटरनल वर्क ऑन पॉइंट है. बट अगर आप इंटरनली कुछ नहीं कर रहे ना, आपके पास गाड़ी है, विला है, कुछ भी है, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड. वो वॉइड हमेशा रहेगा. तो इसलिए बाकी सब चीज़ों पे येस काम करना चाहिए, बट इंटरनल वर्क, और ये नेवर एंडिंग है. ऐसा नहीं है आज बैठे 2 दिन 1 महीने का कोर्स है कर लिया उसके बाद यू आर सॉर्टेड. नो, फेजेस में आते हैं यार ये. एक जो मेजर सिम्टम है इसका,
is when you don't feel happy internally. आपको खुशी नहीं मिल रही है ना, that's the time you should sit down and ask yourself, do some spiritual work, meditate, spend time in nature, quality time family के साथ, pets के साथ, heal yourself, healing energy अपने अंदर लेके आओ. मैं कैसे बात कर रही हूँ, I am totally talking like a healer, which I sometimes feels I am. I don't know, मेरे को पागल ना समझने लग जाना, ठीक है? But there is a lot behind the doors, behind this face there is a lot. But yes, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ. कुछ ज़्यादा करना नहीं था, आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं. ब्राउज मेरे पहले से कर रखे थे, लैशेज, दिस लिप एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने अर्लियर वीडियो में एक बताया था, जब कोलैब के लिए रेडी होते हैं तो क्या करना होता है. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ ब्रीफ कि ऐसा लुक, ऐसा अटायर वगैरह चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने ये किया है. एंड आई थिंक दैट्स इट. ये वीडियो आई हैव केप्ट वेरी रॉ, रैंडम, पर्सनल, रियल. दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. हमेशा ऐसे बबली नहीं होती है लाइफ, एंड दैट्स ओके. दैट्स मेक्स यू ह्यूमन, दैट brings feeling, that brings gratitude. ये वीडियो मैं इसलिए बनाया बिकॉज ऐसा मैं अभी फील कर रही हूँ, ठीक है? मैं कुछ भी ऐसा फसाड नहीं प्ले करना चाहती. ओ गाइस, सी आई एम यूजिंग दिस, आई एम डूइंग दिस. नो, आई डोंट वांटेड टू डू दैट. मैंने कुछ भी ऐसा डीपर लेवल पे टच किया ही नहीं है यहाँ पे. आई जस्ट टॉक्ड व्हाट आई वांटेड टू. आई एम सो वियर्ड. डोंट फील लाइक आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू. इफ़ यू विल बी इन फ्रंट ऑफ मी 1-to-1, मैं सब बता सकती हूँ. बट सोशल मीडिया आई डोंट ट्रस्ट. आई ट्रस्ट यू एज अ audience, you as a person, one-on-one. Social media, no. That's it. I hope you've liked this video. Kept it very like myself, weird. And yeah, love your parents, guys. Take care of them, okay?